चलिए अब संसद के शीतकालीन सत्र का रुख करते हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और ऐसे में लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। डॉक्टर, जहां तक स्मारक का विषय है, स्मारक बनाने का ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी वर्तमान में मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। वैकल्पिक मार्ग को लेकर के जिला कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है, माननीय सदस्य ने भी पत्र लिखा है। हमने राज्य सरकार से उस पत्र के आधार पर वापस एक बार अपनी तरफ से एक सजेस्टिव डीपीआर बनाने के लिए आग्रह किया है कि वो भेजें। उसके बाद में ऐसा जो है हमारा मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हम उस पर विचार कर आगे जो है कोई भी निर्णय कर पाएंगे। अभी तक जो है वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, इस पर अभी कुछ भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। ओके, आज माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी एक नया प्रयास कर सकते हैं कि बहुत संक्षिप्त में जवाब दें और संक्षिप्त में प्रश्न पूछें, तो हम देखें, कोशिश करें कि 20 तक कैसे पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत पेंडोले, मिस्टर पेंडोले, आप एक सदन में इतनी बार बोले हो जो पहली बार कोई नहीं बोला है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हमेशा रहेंगी। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को प्रश्न पूछना चाहूंगा। सरकार महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय स्मारक के उन्नयन में स्थानिक समुदायों को शामिल करने और इसे पर्यटन में माध्यम से रोजगार सृजन के केंद्र रूप में विकसित करने का विचार कर रही है। यस, प्लीज बैठिए। हाँ ना? महारानी बिल्कुल जो है महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक जो है वो ग्वालियर में बना है और उसे ग्वालियर का वो नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं है, लेकिन ग्वालियर की नगरपालिका उसे संरक्षित करती है। लेकिन इस तरह का कोई भी विचार अभी मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 282 282 श्री देवेश चंद्र ठाकुर। माननीय मंत्री जी का पटल पर रखा गया। श्री सागर खंडेरे। नए लोगों को पूछने दो, आप वरिष्ठ नेता हो, आज सबका नया का नंबर कुछ। Thank you, Speaker sir, for giving me an opportunity to speak. I come from the Kalyan Karnataka region, which is a very backward region, and we are also protected by Article 371J of the Constitution, which gives us special status in employment. So what I would like to ask is, in our region, a lot of job migration happens. From my Lok Sabha constituency, Bidar, a lot of youth, after finishing their degree, they go to Hyderabad, Pune and Bangalore to work. So is the central government doing anything to identify these regions where maximum job migration is happening and ensure employment is given to the youth in tier 2 and tier 3 cities? Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में रोजगार की अनेक तकें भी उपलब्ध हुई है और अनेक टाइप का एजुकेशन और स्किल भी डेवलप हुई है। ये स्किल और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार देश के कोई नागरिक नहीं केवल देश में लेकिन सारी दुनिया में जाके रोजगार के लिए प्रयास करते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे कल्याण कर्नाटका हो या कर्नाटका के कोई भी पार्ट हो, वो हैदराबाद भी जा सकते हैं और हैदराबाद के लोग यहाँ कल्याण कर्नाटका या तो उसको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो वहाँ जा सकते हैं। श्रीमती मालविका देवी। हाँ बोलिए। Sir, what are the schemes being given and the steps being taken to increase the opportunities for employment for the people of Kalahandi and Nuapara? Thank you, sir. आज सभी प्रथम बार जो सदस्य चुन के आए उनका सप्लीमेंट्री मिलेगा आज। कालाहांडी के लिए देश के कोई शहर के लिए, कोई टाउन के लिए अलग अलग योजना नहीं करी जाती है, लेकिन भारत सरकार के लिए रोजगार सृजन के लिए जो भी योजना लागू है, इस सारी योजना का लाभ कालाहांडी को भी मिल सकता है। डॉक्टर तोल तिरुमा वलवन। क्वेश्चन नंबर 283। होटल पर रख दीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। नहीं, आपका नहीं है।
Honorable Speaker, sir, I have reviewed the reply. The Honorable Minister has informed that 73.2% of all workers engaged in the non-agriculture sector were in the informal sector during the period from July 2023 to June 2024. There are several critical steps that the government needs to take to streamline the informal economy. Policy measures. In particular, the 15 women who, in less than 3 years together, took up the arduous challenge and prepared in a very challenging environment the Constitution for India, and which has stood the test of time. Until today, we are extremely proud of the way India's democracy is growing. As we mark the 75th year of our Constitution, sir, it is time, I would think, to reaffirm our commitment to build India, that is Bharat, that shall uphold the spirit enshrined in this sacred document. So with those words, I get into telling about the journey that these 75 years have seen of our Indian Constitution, and also to say why India's Constitution and India today stands out in a very separate league of its own. Sir, let me just remind, and I'm sure very many members of this House will know, that post-Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments, and here therefore I would like to have a few words of what Constitution India expert Dr. Subhash Kashyap had to say. While many constitutions of nations framed after the Second World War have floundered and gone into oblivion, our Constitution successfully faced many crises and survived. This itself is evidence of its resilience, dynamism and growth potential. Now, India's experience has shown that our Constitution remains robust, yielding to several amendments, as I said, which were the need of the hour. And Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, had said, and I quote, "I feel, however good a constitution may be, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot." Unquote. These are words of Dr. B.R. Ambedkar, sir. And in this background, therefore, with those words right afresh in our mind, I'd like to discuss about how in the last 7 decades, the living document that our Constitution is, has faced very many amendments. And while looking at those amendments, I'd like to have a touchstone of 4 different elements. One, has the social intent behind any amendment been genuine? And therefore the outcome has been genuine? That's one test I would like to place any amendment on the testing board. Second, I'd like to see if the economic intent and the economic outcome of any constitutional amendment has actually been bona fide and has the outcome helped the society at large.
Third, I'd like to test it on the ground of process adopted for it, for the amendment itself. And fourth, the constitutional spirit behind such an amendment. Now, if an amendment can go through these kind of tests, we'll be able to see why India's constitution, going by the words of Dr. Ambedkar, if you had good people who are called to work on it, give good outcomes. If you have, I'm using Ambedkar's words, bad people who are brought to work on it happen to give such outcomes which are discussed. So if I move to talking about those amendments which